Hello all. As a teacher, I am asked many questions. आप बहुत सारे सवाल हमको पूछते हो, बहुत कुछ जानना चाहते हो, और मेरे ख्याल से एक सवाल जो सबको परेशान करता है, that troubles all of you is, sir, how do we keep ourselves motivated? What do we do so that we don't lose focus? जो पढ़ाई है, जो आपको मेहनत करनी है, उसमें आप कैसे मन बनाए रखें, कैसे उसमें अपना दिल बनाए रखें. So motivation is one of the biggest challenges in this preparation. If you look at all other examinations, आप क्लास 10th की बात करें, आप ग्रेजुएशन की बात करें, और entrance examinations होते हैं, in most cases the effort required is maybe for 2, 3, 4 months. Of course, you have to have a good background, but in very rare cases you need more than 4 or 5 months. But UPSC preparation, civil services preparation, examination का प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जामिनेशन रिक्वायर्स यू टू पुट इन एफर्ट्स विच कैन बी फॉर एज मच एज 2 to 3 years. 2, 3, 4 साल मन बनाए रखना, 2, 3, 4 साल अपना हिम्मत और धैर्य नहीं खोना, ये कोई आसान बात नहीं है. सो इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन दैट ट्रबल्स मेनी ऑफ यू इज़ हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. अब बच्चों देखो, मोटिवेशन का कोई एक फार्मूला तो नहीं है. अगर कोई फार्मूला होता तो शायद इतनी सारी किताबें नहीं होती. Okay, self-help and ways how to succeed. There is no one single path. There is no one single formula here. There are as many ways to succeed as there are people. But then there are some principles. कुछ उसूल हैं, और ये उसूल शायद सब में लागू होते हैं. चाहे आप एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे आप अपने जॉब की बात करें, you talk about research, you talk about even expeditions or your personal interests and hobbies. In every instance, the philosophy of motivation remains the same. Yes, the rules can change. जो नियम हैं, जो कायदे हैं, वो अलग होती हैं. Because the rules of playing a cricket cannot be same as rules of playing basketball. The rules that you need to apply while you're studying for your class 10th examination is not same as what you will require in this examination. But the philosophy and the principles behind them remain the same. So if you ask me what works best, number one, of course, is you have to have a vision. You have to have some clarity about why you want to do what you want to do. It could be something like serving the country. It could be for your growth, rather. It can be for a society you want to contribute to. It could be for a sense of self-worth, a sense of self-efficacy that this career brings with itself. Because मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा और जॉब हमारे कंट्री में तो नहीं है जो इतना बड़ा कैनवस देता है आपको, इतना बड़ा स्कोप देता है. So those of you who want to do well in life, along with have some status, some recognition, this is one of the options that you can pursue. So yes, ये विजन की थोड़ी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. बट बच्चों, ये भी फैक्ट है कि ये विज़न एक दिन में नहीं बनता, एक रात में नहीं बनती. ये विज़न धीरे धीरे ही अपने आप शेप लेती है. इट टेक्स टाइम फॉर सम क्लैरिटी ऑन दिस एस्पेक्ट. बट इफ़ यू डू हैव अ विजन, इफ़ यू डू हैव अ बिगर पर्पस, इट डज मेक थिंग्स ईजी फॉर यू. बट द मोर इम्पॉर्टेंट, द मोर इमीडिएट थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज, आई थिंक, वेरी स्पेसिफिक माइलस्टोन्स, वेरी स्पेसिफिक गोल्स. जैसे कि आप 10 दिन में क्या करना चाहते हैं, आप 6 महीने की टारगेट आपने जो बनाया है वो टारगेट क्या है, आप 2 हफ्ते में क्या हासिल करना चाहते हैं. इट कुड बी कंप्लीशन ऑफ अ चैप्टर, इट कुड बी कंप्लीशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक, इट कुड बी सॉल्विंग 50, 60, 70 क्वेश्चंस, इट कुड बी रिविजन फ्रॉम अ स्पेसिफिक notes that you have. So apart from a very broad vision, you need to have some clarity about the specific milestone, specific targets. And targets are not same as the diffuse vision behind it. तकरीबन 16-17 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये कमी देखी है बच्चों में कि आप लोगों का प्लानर नहीं होता. You don't have a specific plan. You do not have some chalked out strategy about how you want to go about. एंड दैट्स बिकॉज शायद बहुत लोगों को ये एग्ज़ाम की समझ नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी किताबें
कब तक ख़त्म हो जानी चाहिए, कितने क्वेश्चंस आदमी को सॉल्व कर लेना चाहिए, किस वक्त क्लासेस करें, एट व्हाट टाइम शुड यू जॉइन अ टेस्ट सीरीज. I think this is one problem. People do not have clarity in terms of the specific goals and specific milestones, which probably is part of strategy. So that's one limitation I see in students. The second limitation that I think students have is lack of skills and competencies. काम करने का तरीका होता क्या है, जब हम पैशनेट होते हैं, कोई विजन होता है, कोई गोल होता है, तो many a times we think if we work hard we will succeed. It's a fact that if you work hard you will succeed. If you work hard, if you put in all energy, it does help you. But then working hard is not same as acquiring skills. You need to work hard to use your skills. At the same time, you have to work hard to acquire some kind of ability, which could be reading ability, it could be writing abilities, it could be abilities to summarize content, abilities to revise faster, ability to memorize things. Most of us do not spend enough time to acquire these skills. मैंने बहुत बच्चों को सुना है कहते हुए कि क्या सर पॉसिबल है एक साल में क्वालिफाई करना, क्या सर पॉसिबल है एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाना. Invariably, my answer is yes. There are students who qualify in the first attempt. There are a lot of students who make it through within 1 or 2 years of their preparation beginning. But the problem is, the students who qualify in the first attempt already have acquired some skills. These are those who already know how to read, how to write. इनकी कमांड ओवर लैंग्वेज अच्छी होती है, इनको समझ अच्छी होती है जो जिस बारे में पढ़ते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी एकेडमिक हिस्ट्री स्कूल में हो या कॉलेज में हो ठीक रहती है. बट दोज ऑफ यू हु स्टार्ट ऑफ विथ प्रोबेबली लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट्स इन द इनिशियल ईयर्स, इफ़ यू एस्पायर टू क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, इट बिकम्स अ बिट ट्रिकी. If you aspire to qualify within the first 6, 7, 8 months of preparation, it does become challenging. अभी भी हम कहेंगे कि नामुमकिन नहीं है, but you'll have to have a very honest evaluation of whether you have the skills that you need or not. Example के तरीके से बताता हूँ. Imagine that I'm a very passionate man about racing cars. Like I work very hard to collect souvenirs. I work very hard to collect posters. I know about cars. I know how to change tires. I know how to work and repair an engine. But what if I do not have the skills to drive the car? Competencies for driving are not same as competencies in other aspects of racing. So if you're working hard without the basic ability, it's going to be difficult for you to get into the race and win the race. That's probably much later. तो ये एक प्रॉब्लम बच्चों में बहुत कॉमन है. Either we do not know how to assess our competencies or we are not honest about it. बेटा ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत कुछ पढ़ना है. किताबें हैं, नोट्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं. अगर आपके पढ़ने की क्षमता ठीक नहीं है, अगर आपको समझने की ताकत सही आपने डेवलप नहीं किया है, तो ये मुश्किल होगा आपको बहुत कुछ रीडिंग संभालना. It's tough for you to manage when you are juggling through different type of books and notes. And सबसे बड़ी challenge होती है writing skills में. Writing skill perhaps is one of the toughest skills to acquire in a short time. And writing that too in prescribed amount of time, writing within the word limit, writing on the basis of what is asked, writing within the limits of what is expected of you. These are very different and difficult skills to acquire in a short time. So आपके milestones सही हैं, but अगर आपकी competencies ठीक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है. और ये competencies कैसे acquire की जाती हैं, that's a different game. But the good news is most of the skills can be acquired. Most of this ability can be acquired. In fact, if you ask me, this is one of the biggest differentiators between UPSC examination and the other examination that you sit for. Because most of the other examinations are objective, multiple choice question based.
जहाँ कि आपको रिकग्नाइज करना होता है. You just have to recall a concept, maybe eliminate the odd ones out, tick and you're through with it. UPSC and civil examination requires both the skills. You must have skills of solving multiple choice questions and also skills in subjective writing. So you need to have a vision, you need to have targets and specific goals that you have to move towards, and you need to develop the skills required for this examination. And then of course, a very important thing for motivation, very important things to keep yourself in the process is passion. Passion वो जज्बा जिसके साथ आप काम करें. It's a type of investment in emotions that you need to succeed in the examination. ये एग्जामिनेशन किसी के कहने से क्वालिफाई नहीं कर सकते आप. अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं हैं, आप खुद उत्साहित नहीं हैं, अगर आपके अंदर से you don't have the strong calling that you require to qualify, it's going to be difficult for you to put up the kind of efforts you need to put in for good 2, 3, 4 years. पैशन कैसे आता है बेटा, ये समझाना तो अभी मुश्किल है. इतना जान लें, अगर आपको ड्राइव उस टाइप का नहीं है जहाँ कि आप तकरीबन 2-3 साल के लिए बाकी सारा कुछ भूल जाएं. Okay, all commitments, all engagements, you'll have to park aside for some time. I'm not saying that you become a loner and you completely remove yourself from society, but you'll have to have a sense of priority. Because if you're passionate about this service and the career, it requires some extra amount of investments and not a regular life that you have been leading till now. So पैशन जज्बे के साथ अगर काम करें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट के साथ काम करें, तो it becomes easier to manage the kind of pressures that you will have to juggle with. Very important component in your preparation process is the presence of a coach, a mentor, a teacher or a guide. It could be a friend too. बहुत बार हम ये aspects को नज़रअंदाज कर जाते हैं. Yes, for many things in life, particularly those that require smaller efforts or lesser efforts over a shorter time, you may not require a coach, you may not require a mentor to take you through. But जहाँ पर stakes बहुत high होते हैं, जहाँ पर it is not only about learning one thing or reading one book, but it's about your personality, it's about attitude, it's about emotions, it's about juggling many things. अगर साथ में कोई सारथी जैसा बना हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है. अगर आप देखें गीता में ही कहीं ना कहीं अर्जुन को भी श्री कृष्ण की ज़रूरत पड़ी थी. तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कि एक टीचर चाहिए, आपको एक मेंटर चाहिए. Somebody who can be with you, holding your hand, somebody who can be probably just a sounding board. कोई ऐसा आदमी हो जिसके सामने आप बैठ के डिस्कस कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएँ. इससे मन भी हल्का होता है और कहीं ना कहीं एक और एनर्जी, एक और ऊर्जा भी मिलती है आपके प्रिपरेशन को. सो हाउ टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन आसान सवाल नहीं है. इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर. सम अप करते हुए जो मैंने बताया अभी आपको मोटिवेशन के लिए, पहले तो एक अगर विज़न हो आपके पास, एक ब्रॉडर आइडिया हो अबाउट योर पर्पस इन लाइफ, इट डज़ हेल्प योर एफर्ट्स. बट दिस इज़ समथिंग जो आप एक दिन में या एक महीने में, एक साल में शायद ना कर पाएँ. ये तो एक प्रोसेस है. ये अपने आप को ढूंढते रहना, अपने अंदर ही सवाल करते रहना कि आपका इस लाइन से क्या क्या हासिल करने का मकसद है. It could be for the country, for yourself, society. So keep thinking about it. But the more objective assessment on the basis of which you should move ahead are, number one, do you have specific goals and targets or not, which are time bound. किसी न किसी समय की सीमा के अंदर कुछ कुछ आपको करना होता है. कुछ किताबें पढ़नी होती हैं, एक डे का प्लानिंग है, कुछ मंथ्स के प्लानिंग है, टेस्ट सीरीज़ की प्लानिंग है. वो आप ठीक से करिए प्लीज़. तीसरा, you'll have to have some skills. काम करने का तरीका है, काम करने के कुछ कायदे हैं. You have to have some competencies. वो आपको एक्वायर करनी होंगी. रीडिंग स्किल्स हों, रिविजन स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं. और बेटा आपको कोई कुछ भी कहे,
ये मान के चलें ये सब करने का कोई आसान तरीका है नहीं. I've seen lot of books and videos on how to read things in 20 days, in 10 days, in half a day. The magic of completing newspapers in 15 minutes or 20 minutes. बेटा ये सब marketing के तरीके हैं. You all are wise enough to understand what is going to work for you and what will not work for you. इतनी तो समझ आ ही जाती है. तो जब आप वीडियो सुने या किसी स्टूडेंट्स को कहते हुए सुने कि उन्होंने कुछ एक कॉम्पिटेंसी हासिल कर ली है सिर्फ 10 डेज़ के मेहनत से. Some of them have finished off books like D.D. Basu and Subhash Kashyap and probably finished entire history in just about 5 days or 1 week or 10 days and memorized and through with it. So take it with a healthy dose of salt. These are too good to be true. It requires efforts. Skills ऐसे आराम से एक्वायर नहीं होते हैं. आपको उसमें लगना होगा, मेहनत करना होगा. उसमें मायूसी भी होगी, you'll be disappointed sometimes with yourself, but keep at it. Passion is very important because that's what gets you going even when things are down for you. Okay, with emotion. और passion purpose से आता है, कुछ हद तक passion success से भी आता है. से आपने अगर कोई टारगेट सेट किया हुआ है और आप वो हासिल कर लेते हैं, you feel nice about it and you want to do more of it. So lot of commitment comes from small goals that you achieve. So they're linked to one another. Your skills, your competencies, your hard work and your passion. And of course you will do good if you have somebody to walk along with you. A partner, a teacher, a mentor. Like, it's not easy to find one, it's not easy to trust one, that I understand. But कोई अगर साथ हो आपके, it could be your parents, it could be your best friend, somebody who you can unburden yourself on, somebody who you trust will give you the right input and feedback when required, somebody who honestly, but of course not humiliatingly, tell you where you need to work on. So all this put together, I think will be a good package to keep yourself in the process of preparation. और अगर आप मुझे पूछें to sum up the whole thing, it'll be nice if you can start accepting this preparation as a part of your personality development. बहुत बार क्या होता है कि in our school career, in our college career, we get limited by small targets. We get limited by small goals of qualifying an examination. जो overall personality होती है, जिसमें कि आपकी attitudes, your belief systems, your value systems, discipline, all that matters, many of these initial achievements do not depend so much on these aspects. UPSC आपको वो डेवलप करा देगा जो शायद आप अदरवाइज डेवलप ना कर पाएँ. एंड गॉड फॉरबिड इफ यू डोंट क्वालिफाई, ये जो स्किल्स आप एक्वायर करते हैं ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा. सो अगर 2-3 साल आप डालना चाहें इन द प्रोसेस ऑफ rediscovering your own passions, in the process of learning new skills, please go ahead with it. But yes, be honest, be objective in how you assess yourself and how you plan the process ahead. So my best wishes. I hope this helps you to some extent. There's no magic formula like I said, but I'm sure this should give you some indicators on what you should work on to keep yourself motivated. Thank you.